Good evening, good morning, good afternoon to all the you who have been listening to us today in this episode 3 of live interaction series from all over the globe. And today we have a special session with our race directors, and I hope you must be having a lot of questions to ask to our directors in today's session. So I hope this is going to be informative as well as it's going to be fun. So, okay, before we start, before I call my guests, I mean, not exactly guests, but the directors today, let me give a small brief about them so that you know uh, from where they are coming from and what is their experience in the field of ultra running. Okay, so let me start with our first race director, Mr. Gagandeep Meena. So Gagandeep is currently working with NIT Patna as an assistant professor. He enjoys teaching, of course, that's why he's teaching in NIT Patna. Other than teaching, he has got interest in the field of theater, reading, and storytelling via different mediums. So that's like quite a multitasking guy. As an aspiring runner, he mostly DNF ultra races whenever he participates in them. Wow. Mostly DNFs. Wow. So one of his most talked DNFs is at Solang Sky Ultra, which is of 100 kilometers. And this happened in 2019, which was organized by Hellrace, when he tried for the first time in this category. Other DNFs, it's a long list of DNFs which Mr. Gagandeep Meena has, but let me mention some of those here. So other DNFs are the border happens in Jaisalmer, which is 100 miler, but he stopped after 100 kilometers. Pune Ultra Marathon, 100 kilometers in 2022, then Dandeli Ultra, 75 kilometer in 2021, and other than these larger marathons, he also does some morning and evening runs, which he usually and casually quits. And he's going to be our first quit master today. Of course, he's one of our race directors as well. So maybe he's the right person to talk about a race which has got more DNFs and only one finisher, which is India Backyard Ultra. So let me welcome Mr. Gagandeep Meena in today's session. And then we have got Mr. Gaurav Madan, uh, based currently in Oslo. So Gaurav is a researcher in the physical oceanography and climate change at University of Oslo by day and a storyteller by evening. He has been running ultra marathons for over a decade, having featured in races across India, Canada, USA, and Norway. Currently, he's on an unbeaten spree of DNFs. Wow. So we have got two guys here who have experience of more than 7 DNFs. So Gaurav has 7 DNFs in total so far, and which is in some of the world's most challenging races, including Big's Backyard Ultra World Championship. And other than this, he has got DNFs in Barclay Fall Classic, then San Sanya, 100 kilometer, then Tuscobia Winter Ultra, to name a few. And he's our second race director. So I welcome, guys. Welcome. How are you doing today? Great. Well, pretty good. Great. I can see Mr. Gagandeep is sitting in his office, I think. Are you still in your like NIT's office now? Yeah, I mean, pretty few races of the Vivas and exams, and then yeah, here to talk about the interesting thing. Great, great. Thank you for taking out time for for our viewers. And Gaurav, what about you? Are you also sitting and enjoying morning? I think in Oslo at the office.
So this is the lunchtime in Okay. Oslo. So I'm sitting in a cubicle in my office. So Okay. yeah, taking time to the work. Okay. 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 So I can see that you have got a lot of experience in DNFs as DNF in a lot of races. So let me start with like putting this very first question, uh, which is about the history of this whole event, India Backyard Ultra. Gagan, would you like to share your a brief overview or a brief history about this event, India Backyard Ultra, with us? Okay, so India Backyard Ultra came into existence because of one of our most favorite guy, and this guy who is upside me, Hmm. Gaurav Madan, Hmm. and Vishwas Sindhu, who is there with us who was there for with us for the last two editions, and so Vishwas was the first one to create the Facebook page for the Last Man Stands in India's backyard. And before that, this happened in 2019. And before that, Gaurav and I used to follow Barclay marathons and Big's backyard. So, and then after we became friends on Facebook, though we knew each other early from you know old college days. So yeah, so we shared this passion of running together, and then we talked about the races, we talked about the good runners, we talked about the female participants who performed at Big Backyard Ultra, and also talked about the Indians performing at Big's Backyard as well as Barclay Marathons, which was very less, I think, only handful of people. I think only one guy. Yeah, Naresh. Hmm. So so we were, like the mad fans of these two amazingly crazy races, and Hmm. we followed these two races a lot. I started sketching. He used to post about it in the groups where all over the people from all over the world are there on Facebook. Hmm. So I mean, he wanted to run, I wanted to run this race, but we never wanted to organize this. Hmm. Uh, Once in our conversations, we thought that this race should also come to India, and that's where everything started, and the rest all is history. We planned the first edition in 2019, also, I mean, 2018, 2017. We kept on planning during our conversations, and it finally materialized in 2020. And yeah, mm, we just love the way people loved it, Hmm. and still loving it. And we are excited about the performances which we see every time in every edition. There are many stories, there are many inspirational part. तो ये जो बात है इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा की, ये बड़ी शानदार बात है। और जिस तरीके से ये कहानी रही है कि हम दो दोस्तों की बातों से, मुलाकातों से और चर्चाओं से ये एक रेस ने जन्म लिया। और ये ये एक मज़ेदार बात है, और ये इसमें बहुत मज़ा आता है ना, ये मज़ेदार वाली चीज़ है, इसमें रस है, Hmm. ठीक है? Hmm. इसमें हम खूब मस्ती भी करते हैं, खूब कहानियाँ होती है, मस्करियाँ होती हैं। तो दिस रेस Hmm. इज़ नॉट जस्ट अ रेस, इट्स अ पार्टी, और खूब धूम-धाम मस्ती के साथ होने वाली चीज़ है ये। सो दिस इज़ ये छोटा-मोटा एक इसका थोड़ा-सा ब्रीफ है कि कैसे ये रेस एक्जिस्टेंस में आई है। Okay, okay. Uh, Thank you so much for that. Gaurav, any thoughts, anything you would like to add into the history or the origins of like specifically India Backyard Ultra? Well, I think the ideal way to begin would be to step back even further and talk about the Backyard Ultra itself, which began in 2011 Hmm. at Lazar's home, because he was always thinking that how much can somebody run, Hmm. and how many 100 milers can people run in 24 hours. Hmm. So what he decided, 100 miles in 24 hours. So Hmm. 1 hour will have 6.7 kilometers to run. Hmm.
And that's how the Backyard Ultra began at his home back in 2011 with 30 or 35 odd people. Hmm. Nobody knew Laz at that point other than some of the Barkley Marathons community. Hmm. And then the race progressed. And by 2015, uh, they had the applications were filling within 1 year, Hmm. within one Ah. day, sorry. Oh yeah. So, Hmm. so that's how World Championship began when there were so many applications coming from all across the world. Mhm. There had to be something Hmm. to for them to achieve before they can stand on the start line of Big's Backyard Ultra. Hmm. And that's how origined the golden tickets. Hmm. And India Backyard was one of the Asia's first races to get the golden ticket awarded Okay. so that Mhm. people could participate in the World Championship. I Hmm. got the honor to be the first Indian to be representing India at the World Championships in 2019. Hmm. Didn't last long enough because I was carrying an injury from Barkley 4 Classic, and that's when my DNF spree began. Hmm. But today, since backyard ultras are like extremely popular format across the world in Hmm. 57 different countries, so all the races now are silver ticket races. The World Championship is now in two separate ways. In odd years, it's individual championship, and in even years, it is national team championship. So Hmm. India Backyard Ultra that's going to happen in February Hmm. is a silver ticket event where we will be making selections for Team India that will represent India in October of 2022 to Hmm. compete against rest of the world, Hmm. where these satellite events will be happening across the world, and Mhm. national teams will be competing against each other. So that's where we are in the broader scheme of things. And the winners within those teams in Mhm. October will Mhm. get the golden ticket to represent India at the World Championship in October 2023. So that's where we Hmm. are. Wow, that sounds fascinating to me, and it will be quite interesting to see that in the October, that golden ticket event, when it will start at the same time globally, and where when people are gonna compete with each other and as a team as well. So that will be fascinating to see. Gaurav, so I have this question which is related to what you have just spoken to us. It's so why, like, because it was a golden ticket event in like last year and last year, right? So Yeah. why has it become a silver ticket event now, like for this February edition? And then um, so this golden ticket event, so how it's gonna work, like the silver ticket event and the golden ticket event, if you would like to share anything. Yeah. So every races, so different countries have different races. Like I'm in Norway, right next to Norway, Sweden. Sweden Mm. has more than 50 backyard events right Mm-hmm. now. So when you have so many backyard events, you cannot award golden ticket to every event, right? Because there are only 75 slots that World Championship has. Mm. So what it was designed, and quarantine backyard ultra that happened in during the pandemic Mm. opened opportunity that backyard ultras can happen within the country, and they can still be connected via technology. Mm. So that's Mm. where the idea, I believe, came from, where to have more people who can enjoy the format and Mm. still represent their nations. So Mm. that's where team championship came into picture, and the selections Mm. for team have to be in a particular protocol, right? Mm. And to assist in selection of those teams came in Mm. silver ticket events, right? Mm. Every backyard ultra that was golden ticket across the world became silver ticket event. Even in some cases, there are bronze ticket events. Every event in Sweden is a bronze ticket event, right? Okay. Some events Mm. in Canada and US, they are bronze ticket events. So Mm. people who win the bronze ticket from different backyards, Mm. they get to I think compete in the that's silver ticket events, yeah. and then silver ticket winners will get to be a part of the team Mm. that will represent their country to compete in that satellite team event. And the Okay. winner, national winner of that team, Mm. would get the golden ticket, and Mm. that person will represent the nation in the world championship Mm. in 2023. So that's how the hierarchical structure of backyard ultras is at the moment. So there's nobody is demoted as such from golden ticket to Mm. silver ticket. It's Mm. just that the format itself has evolved Evolved, yeah. to present them in such a way. Hmm. Hmm.
ओके, गगन, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? Like, what is the criteria of getting the golden ticket? Because a lot, as Gaurav mentioned, that we have got many silver ticket events now. तो गोल्डन टिकट का क्या ऐसा हमने कैलकुलेशन किया है? इसका कैलकुलेशन एज इन जैसा गौरव ने अभी बताया कि हमारे पास अब नंबर ऑफ रेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हो गई हैं। रेसेस बढ़ गई है पिछले 3 4 5 सालों में। और जहाँ पे गौरव ने बताया कि स्वीडन में और यूएस में और कनाडा में, यूरोप में, बाकी जगहों पे क्या है कि ब्रॉन्ज टिकट रेसेस भी हैं। तो जब ऑब्वियसली पहले लेजर्स लीग के पास रेसेस कम थी, तो उस टाइम पे गोल्डन टिकट्स ज़्यादातर कंट्रीज में दे दिए गए थे। सो मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन मेन इवेंट, जो कि बेल बकल यूएसए में होता है, टेनेसी में। ठीक है। तो अब लेकिन क्या है, जब नंबर ऑफ रेसेस ज़्यादा बढ़ गई तो उसको एक प्रॉपर फॉर्मल वे में अरेंज करके, और ताकि सब लोगों को बराबरी का मौका मिले, और सब लोग जितने भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस रेस फॉर्मेट में, वो इन्वॉल्व हों और पार्टिसिपेट करें और अपने हुनर को और अपने परफॉर्मेंस को डिलीवर कर पाएं, ऐसा हो सके। इसलिए इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग कर दी गई, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई। और उस रीस्ट्रक्चरिंग में ये निकल के आया कि हर कंट्री में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रेसेस जो कि उस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं किसी भी देश में, तो वहां पर सिल्वर ब्रॉन्ज टिकट रेसेस बनाई जाएंगी, सिल्वर टिकट रेसेस होंगी। और अगर ज्यादा नंबर होगा तो फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंट्री, जितना बड़ा देश है तो उसके हिसाब से लैज खुद डिसाइड करता है कि हाउ मेनी रेसेस ही कैन give as silver ticket events and how many races he can give as bronze ticket events. तो और इन सारे रेसेस के परफॉर्मेंसेस में, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स जो हमारे रनर्स लॉग करते हैं अपनी रेस के दौरान, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर दो एक एट लार्ज लिस्ट चलती हैं। ठीक है। तो उन एट लार्ज लिस्ट में टॉप परफॉर्मर्स जो होते हैं, जैसे किसी ने 20 घंटे किया, किसी ने 30 घंटे किया, किसी ने 40 घंटे किया, 50 घंटे किया, तो उसी हिसाब से उसके क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से वो लिस्ट बनेगी। और जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनके नाम टॉप पे रहेंगे। और अब ऐसा हो गया कि पहले गोल्डन टिकट इवेंट हर साल हुआ करता था, अब 2 साल में एक बार होगा। हाँ, जो कि वही टेनेसी वाला जो इवेंट है, यूएसए वाला इवेंट, वो 2 साल में एक बार होगा। और जो गोल्डन टिकट पहले हर साल होता था, तो हर देश में गोल्डन टिकट हर साल मिलता था। लेकिन अब जब 2 साल में एक बार हो रहा है, तो गोल्डन टिकट मिलेगा भी 2 साल में एक ही बार। ठीक है। तो अभी ऐसा हुआ है कि पिछले साल से और इस साल होने वाली भारत में जितनी भी सिल्वर टिकट रेसेस हैं, उनमें तमाम जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने रनर्स हैं, वो लोग दौड़ेंगे और उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से एक लिस्ट बनेगी। और उनमें से टॉप के 15 लोग सेलेक्ट होंगे जो कि टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा इज वन ऑफ द सिल्वर टिकट रेस। एंड बाकी रेसेस हैं, उनमें से कुछ दिनों पहले जयपुर में एक हुई है, फिर पुणे में एक है, अहमदाबाद में 2 हैं, और बाकी रेसेस देयर इज वन मोर इन या ये रेसेस हैं। तो ये सारी रेसेस भी हैं, और इनमें भी दौड़ के आप सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस में आओगे, जो कि हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। यानी कि हमारी ही जो टीम है, वही टीम उसको फिर से अक्टूबर में ऑर्गेनाइज करवाएगी, 15 अक्टूबर को। तो या ये कुछ इस तरीके का है। Okay. So to all the listeners, if you have got any questions, you can shoot them at any point of time. You can write it here on our Facebook, or if you are watching us on YouTube, you can comment. But it would be good if you write it on the Facebook page. So you can do that. You have got privilege to ask questions to our two lovely race directors. Whatever you want to ask, what any kind of confusions, any questions, you are please feel free to ask them. Okay.
So let me go back to Gaurav then. Gaurav, what are like what are the possible things, or like, as a participant, if I am coming, so what all should I need to know before about IBU, about India Backyard Ultra, and as an audience as well, like who is not coming from the race or running background. So what are the important information? What is the important information? Any instruction you would like to give or share regarding IBU? Well, Backyard Ultra is probably the simplest format of races in the world. There is 6.7 kilometer loop. You have 60 minutes to finish that loop and start the next one. Mm, The race is flagged off every hour. mm, So at any given point in time in the race, everybody is tied for the first position, mm, right? And when you have finished your previous loop, and the time between finishing your previous loop and starting the next loop, let's say mm, if you finish your loop in 40 minutes, you have 20 minutes and you can get as much help from your crew, if you have a crew, as mm, you want. mm, But as soon as you leave the start line to start the next loop, no other help can be provided to you until mm, you finish that loop. If you accept any assistance during the loop, then of course you are disqualified. So mm, ground rules are pretty simple. You can only support your runner when he has finished your loop, mm, before he enters into the corral. So corral is a place where every runner stands before the loop is flagged off. We have a mm, countdown before start of every hour mm, from 10 to 0. And mm, as soon as the race director rings the bell, runners mm, start running and you have to mm, leave the start line. mm, So things are pretty simple in overall sense. mm, And I don't think people should have any confusion about the ground rules. mm. What if a person who has just finished his or her loop, and he or she, fails to enter the corral before, like, by the time the bell rings, what will happen then? Well, as the ground rule says, you have to start the loop when the bell is rung, and if you fail to be in the corral at the time the bell is rung, you are DNF. So you have to So be I inside. yes, I have seen people missing races by 1 second, even after Mm, 30 hours. So it becomes more and more challenging for you to be in the corral mm, uh, within the last 10 seconds as hours progress, because you mm, want to stay on that chair for as mm, long as possible, because there is just suffering mm, after once you leave the start line. mm, 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 mm. Yes, yes, that I also experienced when I was there on ground. I mean, I was that guy who actually, made one person who did not enter the corral um, by the time the bell rang. So I was the guy. So it was like heartbreaking for me as well. But again, the ground rules, you have to follow them. ऐसा So है ना okay. भाई, वो Uh, बात ऐसी है कि दिल दुखे चाहे दिमाग कुछ भी करे, नियम तो नियम है, वो आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। हाँ, वही और बात है। हाँ, उसमें और कोई दुविधा कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे अभी आशीष ने बताया कि हार्ट ब्रेकिंग था। यार हार्ट ब्रेकिंग तो होता है, मेरे लिए भी आसान नहीं होता है जब इतने अच्छे-अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं। मतलब कि हुँ, देख लो यार, इंडिया के बेस्ट लोग आते हैं दौड़ने, ठीक है? बिल्कुल। एक से एक सॉलिड रनर होता है वहाँ पे ना, वो हुँ, इतनी मेहनत करके अपने खून-पसीने की मेहनत से इतने महीनों से सोया हुँ, है, नहीं सोया है, खाया है, नहीं खाया है, मतलब उसने अपनी जान लगा रखी है परफ़ॉर्म करने में। हुँ, उसके हुँ, साथ उसकी क्रू है जो उसकी पूरी हिम्मत बना रही है, जैसे-तैसे कर रहे हैं। पता नहीं बिल्कुल। किस तरह के मतलब सोसाइटी से वो लोग आते हैं। हुँ, हर तरह के लोग होते हैं अपने पास ना, हर तरह के ओहदे से, हर तरह के हुँ, सामाजिक वर्ग से लोग आते हैं। हुँ, और तो सारे इमोशनल कोशेंट हैं वहाँ पे हुँ, और बहुत कुछ हो रहा होता है। बट हुँ, उन सब के बाद आपको अपना ड्यूटी करना है और हुँ, आपको अपना काम करना है। मैं हुँ, कई बार अंदर से इमोशनल होता हूँ, बट वो इमोशंस आई हैव टू कंटेन इट। हुँ, आई हैव टू डू माय जॉब हुँ, एवरी टाइम, एवरी आवर। आई कैन नॉट मिस एनी टाइम। मैं कोई छोटा-सा मिनट या सेकंड कोई मिस नहीं कर सकता हूँ। हुँ, और यही ऐसा करके, क्योंकि भारत में ना बहुत सारे रनर्स
का जो दौड़ने का तरीका है, इवेंट्स को लेने का तरीका है, वो काफ़ी अलग है। और थोड़ा चीज़ों को अलग तरीके से नियमानुसार करते हुए शायद अगर हम कुछ बेहतर चीज़ें कर पाएँ, तो कहीं न कहीं भारत में दौड़ने वाले लोगों को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और सबके लिए एक ओवरऑल जो हमारी रनिंग कम्युनिटी है, उसमें कुछ बेहतरीन बदलावों की उम्मीद है। तो इसलिए वो इमोशंस तो इमोशंस हैं, बट काम अपना करना पड़ता है। ओके, तो इस पॉइंट पर मैं गगन आपसे ये अगला सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप ही हैं वो बैल बजाने वाले अकेले रेस डायरेक्टर जो कोरल की लाइन के कोने में खड़े होके उस बड़ी सी काऊ बैल के साथ पाए जाते हैं हर घंटे। अरे क्या तो बताऊं मैं। मेरा तो नाम, सवाल, मेरे हाँ मेरे अलग अलग तरह के नाम रखे गए हैं। एक तो रखा है गुरु हाँ, गुरु गुरु घंटाल। गुरु घंटाल, हाँ हाँ, या फिर हाँ घंटाल बाबा, या फिर कुछ कुछ इस तरह के घड़ियाल बाबा, कुछ कुछ हाँ देयर वर सेवरल नेम्स। तो हाँ कुछ कुछ ऐसे नाम थे जो मेरे हाँ रखे गए। हाँ और मजे लेते हैं जनता, रनर क्रू भी बहुत मजे लेती है। हाँ जो पार्टिसिपेंट जब कोरल में आता है तो उसका भी हाँ जब परेशान तो हो रहा है वो, दर्द हाँ, तो बहुत हो रहा है भाई के, है ना। हम्म या हम्म फिर और भी जो हमारी फीमेल रनर्स आती हैं, हम्म एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, बट हम्म उसके बाद भी दे समहाउ क्रिएट अ नाइस जोक और एक छोटा सा अच्छा मोमेंट क्रिएट करते हैं वो लोग, हम्म जिससे वो हम्म खुद भी एंटरटेन हो जाते हैं, बाकी लोगों को भी एंटरटेन करते हैं हम्म, और काफी इंटरेस्टिंग माहौल हो जाता है। हाँ पर हाँ, पर एक चीज है कि पहले दिन में कुछ नहीं होता है, पहली रात जब आती है हम्म तो फिर वो डीमंस निकलना शुरू होते हैं। और हम्म तो फिर क्या ना, लोगों की भड़ास, वो हंसी खुशी और वो हनीमून पीरियड खत्म, ठीक है। हाँ हाँ, अभी क्या है कि दुख की घड़ियां शुरू हो जाती है कई लोगों की, शाम तक हम्म रात तक। हम्म और उसके बाद जनता जो है फिर गाली भी मन से दे रहे होते हैं। वो हम्म भाव जो गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का, वो असली भाव होता है। हम्म जैसे ही 3rd मिनट की विशल बजती है, हम्म तो 3 विशल बजते हैं, 4-5 नजरें तो ऐसी निकलती है मेरी तरफ, तो हम्म, बजा दी इसने फिर से। हाँ हाँ। टाइप्स। Okay, so Gagan, what is the significance of that bell? Like, why, like, as in the events of IBU, in the events of So Rackyard Ultra, and also related in addition to that, and why, like, is there any specific reason of choosing that cow bell for IBU? Two यार, questions. काउबेल Hmm. काउबेल बहुत सारी चीजों के स्पेसिफिक रीजन नहीं है जो लेजारिस लेक बिग्स बैकयार्ड में करते हैं। Hmm. उनको हम करते हैं, प्लस इनके लॉजिक हैं, ठीक है, Hmm. कि हम Hmm. इंडिया में उनको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम Hmm. बेल की जगह पे एक विशल भी बजा सकते हैं फाइनल लूप स्टार्ट करने के लिए, बट Hmm. बेल थोड़ा अच्छा लगता है ना। Hmm. वो धुली Hmm. बेला की याद आ जाती है, गाय के गले की घंटी अगर आप बजाओ। हाँ लेकिन अगर वो घंटी आप हर घंटे बजा रहे हो, तो हाँ ज्यादा देर तक वो अच्छी गोधुली बेला नहीं रहती। वो लोगों वो पहले हाँ, दिन में अच्छी लगती है लोगों को, उसके बाद फिर वो लोगों को पेन हम्म लगने लगता है, वो नफरत हम्म हो जाती है उससे, उस घंटी से हम्म लोगों को। तो वो बेल रिंग से पहले हम्म 3 मिनट तक कुछ अलग थोड़ा सा सेटअप होता है। हाँ पूरा 60 मिनट से हम्म 3 मिनट पहले जो होता है, हाँ और तो 3 मिनट पहले मैं 3 बार विशल बजाता हूँ। और उसका मतलब है कि अब 3 मिनट बचे हुए हैं, कोरल की तरफ आना शुरू कर दो या आ जाओ, ठीक है। हम्म फिर 2 मिनट पहले 2 बार विशल बजाता हूँ, हम्म और 1 मिनट पहले एक बार लंबी विशल बजाता हूँ। तो अब ये इतना ही टाइम बचा हुआ है, अब आ जाओ कोरल में, एंड द रेस इज स्टार्टिंग अगेन फॉर द नेक्स्ट आवर, ठीक है। तो लास्ट के 10 सेकंड काउंट होते हैं और फिर वो बेल बजती है। तो ये एक तरीके से छोटा सा परफॉर्मेंस है। हम्म It is a small performance. So we हम्म have a question: how significant a role does a crew play? ग्रुप प्ले, Can anyone even consider doing this without विदाउट having a crew? हैविंग अ ग्रुप। हाँ, तो ऐसा हुआ है। आई कानपुर थिंक से लास्ट हमारे, ईयर वी हैड सम हाँ, पार्टिसिपेंट्स, या ऐसा हुआ है। पहले वी हैड रनर्स फ्रॉम कानपुर एंड फ्रॉम बैंगलोर एंड from various places of India who came and managed their race by themselves. But it is very, very helpful to have crew. I do not remember someone
remaining in last 5 or last 6 runners without crew. So everyone had crew, and crew plays a very important role in performance at Backyard Ultra. I think more light can Gaurav can throw on it. So here I would like to interject a little bit. So for longest period of time at Big's Backyard, people were struggling to go beyond the second night, right? Second night means beyond 36 hours. 36, yeah. Then Guillaume in 2017 went to 59 hours. Amazing effort. And even further, next year, Johan Steen from Sweden went to 68 hours, and that record Okay. stayed for a while. Hmm. When Johan ran 68 hours, he did not have a crew. Wow. That was the longest That is standing some. record in the world, and Johan did 68 loops without any. Hmm. So yeah, people do take crew. People do give crew importance because that takes a lot of other things out of the equation. Because there is somebody sitting at the start line to keep your resources together. That gives you enough of mental peace when you are out there. Otherwise, you are always thinking, I have to get there like with 7-8 minutes to spare, find the things, and that becomes difficult once you are into second day, second night, because you are hallucinating as well. Your hands are not moving as fast as they were earlier. So their crew's assistance really helps you to keep your race very easy. But do not be fooled by this that if you are running without crew, you stand no chance, because one of the world's best runner, Johan, did that all by himself. Plus, as people DNF, they generally choose to stay back and they end up crewing for some other runner. So there is always supply of crew that is available in case if you feel later in the race that, oh, I need a crew, there will be people who are there who have DNF, and they are happy to help in any possible capacity. Yash Mishra has shared his views on it. If you are planning to go beyond, then it's not possible without the crew. Again, as I said, Hmm. crew always is helpful, but runners generally end up staying back. Okay, I DNF'd in Big's Backyard in 2019. The moment I DNF'd, I joined the team of Great Britain, and I started crewing for these two guys, Andy and Mark. They were in the race without crew, and I continued supporting them till 33 hours. So I was their only crew at that point. Once Andy was out at 33rd hour, then I joined Team Sweden. There I was supporting Toby and Anna Carlson. So these were the two people that I was providing my crew support. So people always who quit, they generally stay back and they start supporting others. But in case of Johan, nobody was there really in the first 48 hours to support him. Yes, people do share their resources as well, because okay, backyard ultra, the thing that makes it difficult for runners is you do not know how much resources to bring, because you don't know how long the race is going to continue, right? Yes. Yes. Then the challenge is, how much food do you need, how many pairs of clothes do you need, how many pairs of socks, t-shirts, shorts you need. So it becomes a challenge to balance all of it, right? Once you are like beyond 48 hours, you are running out of food, you are running out of clothes. That's when other runners start to generally pitch in. They share their, okay, even underwears happened with Johan. So so Okay. a lot of Uh, things do happen. The best part of backyard ultras are the camaraderie among the runners. Right. They are not competitors, they are supporting each other, and the race Yeah. itself is designed in a way that where you want the race to last for as long as possible. Yeah. So this is kind of, dichotomy, I would say. Some people believe crew is of utmost important. I do not come from that school of thought. I believe it's runner's But capacity. Help is always available for those who deserve at backyard. आई थिंक यश का जो कमेंट आ रहा है वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से आ रहा है. ही इज वन ऑफ दो गाइज हु ran without crew at India Backyard Ultra. And अगर वो भुगत भोगी आदमी अपनी आप बीती बता रहा है तो शायद वो हेल्प कर सकता है बाकी लोगों को. बिल्कुल. So yeah, it's good. Again, it That's depends. यार अनुभव पे डिपेंड करता है. अगर कोई रनर अच्छा है, उसको अपने बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, वो चीजें प्लान करके आया है, तो उसको क्रू की जरूरत नहीं है. Johan Steen was one of those people, right? If you understand your system well, then you can survive for a long time by your own. That's right. अगर
कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको जरूरत है हेल्प की, और Hmm. हेल्प इज ऑलवेज गुड, राइट? Hmm. दे Hmm. दे मेक यू परफॉर्म बेटर, क्योंकि लास्ट में Yes. ऐसा होता है ना, हर मिनट इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिल्कुल. The moment you are after in the race for like 40 hours, or at India we have 41 hours maximum. So वो चीजें बाद में जाके एक एक मिनट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाता है. Hmm. Hmm. क्योंकि पहले तो ये होता है कि टिल 24 आवर्स और टिल 25 26 7 आवर्स एवरीवन कम्स इन द कोरल एट द फर्स्ट विशल, है ना, क्योंकि 3 मिनट पहले बजती है. बिल्कुल. धीरे धीरे क्या होता है कि 30 सेकंड पहले आना शुरू होती है जनता. Hmm. So, why this time is changing? It is because everyone is tired. Everyone is realizing the importance of time. People are taking their time to rest well and then come back to the next week. Hmm. Okay, एक नया सवाल है लैशराम I से. think, That's yeah, I think before we go to Leishram's question, I think it's important that it's a nice segue to discuss what is new in India Backyard Ultra 2022 compared to the past two editions. yeah. I was coming to that. Yeah. Thank you. Okay. So what's new, Mr. Gagandeep sir? What's new at this time? Okay, so new is that we have more number of spots opened for all the runners, and we have a little bit relaxed situation at the moment from COVID, outbreak. So we are opening for 70 spots, and we might have. I'll also answer the question which is there. Will there be a new route this time? So there might be new route. Okay, and Might be new. yeah, I won't. I mean, It's yeah, not the same route, I think, but it's in the similar. It is a new route. I I think it is it's a a I new new I route. route. Yeah. I would take the might away from Gagan. It is a new route. Well, Right, that's why Gaurav Madan is gonna join us for the first time live on the site of India Backyard Ultra. Just to right, make right. sure. Yeah. You know what I was thinking? So India Backyard Ultra is in its third edition, and I was kind of managing in whatever capacity I could. The first edition from North America, second edition I managed from Europe, Yeah. and the third And now one he's finally for the third finally one. I will be He's in finally India. coming to India. That's good. So maybe in Good the progression. good progression, good progression. Yeah, Gaurav, you would like to add to something? Yeah, I might be a little worked up, so I think I'm forgetting something. Yeah. Worked up. So we started with this that this edition is a silver ticket edition, unlike the past two editions that have been golden ticket. There is a new route for sure, not the same one as you have run in last two editions. There are attempts to have even a third route ready, but Yeah, again, that is in progress. in So if progress. that happens in time, then I don't know. Then We it'll be may very see. exciting. It'll be very exciting. Yes. And also, there's a big announcement. So right now there are 6 silver ticket events in India. At least on paper, how many of them will actually happen? We have no idea. Right now, Jaipur event has already happened. We know Pune is coming up Pune, together, yeah. and this is a third one. For other 3, we have no idea. So the team of India will be selected through all these events. Some announcements. So Team India already has 4 members a part of it. First one being Karthik Joshi, who Karthik. won the golden ticket last year. He is a default entry into Team India. Then the second is Rakesh Kashyap, who won Black Horse Backyard Ultra a few weeks ago. So he's a default entry. Then Munish Dev was assist in our last edition to Karthik. So Munish is a default entry. And our fourth runner was Vishal Adhav. He's also a default entry into Team India. So 4 slots of Team India have already been taken, right? Out of 15. Out of 15. So now we are looking for 11 11 more. slots. So 11 slots will be filled by these 5 remaining Backyard Ultra. Black Horse is done with the winners of 5 of these Backyard Ultra. And there is also an at-large list that is being compiled. So at-large list mean every time you participate in a backyard race, the number of loops that you will log in that race will be entered into that.
And this list is maintained by not the total number of loops you have run in total in that year, but only the total loops that you have run in that year, in that race. Okay. So if, let's say, if somebody runs 37 loops in India backyard, his name will be there with 37 loops. If they end up running more loops in a different race, let's say in Ahmedabad, then that 37 entry will stay, but there will be one more entry for them with more number of loops if they have logged in. So this at-large list will be maintained, and Team India will be compiled from this at-large list. So that's something new. What India Backyard offers you really as a race is the fact that the race trail that we are using for this edition of India Backyard will remain the same. That will be used for October National Team Championship. So that gives you a leverage. And not just that, we are also providing the free entry to the winner of India Backyard Ultra into the National Team Championship. So there is a lot to fight for, and every performance matters. Every या performance तो matters. मैं इन दो चार चीज़ों को मैं दोबारा से हिंदी में बता देना चाहूँगा, क्योंकि हाँ कुछ जी, हाँ लोग जी, हमारे दोस्त लोग हैं जो कि हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं। बिल्कुल। और तो इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा में कुछ चीज़ें नई हैं। उनमें ये है कि हर बार की तरह गोल्डन टिकट रेस नहीं है, ये एक सिल्वर टिकट रेस है। और इसी सिल्वर टिकट रेस के साथ में बाकी 4 से 5 सिल्वर टिकट रेसेस भी हैं। आप इस रेस में पार्टिसिपेट करके टीम इंडिया के लिए अपनी भागीदारी स्थापित कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा के अलावा जो रेसेस हैं, जयपुर वाली रेस हो चुकी है, बाकी बचती है अहमदाबाद की नेवर गिव अप और ट्राइडेंट बैकयार्ड अल्ट्रा, वो भी अहमदाबाद से, और स्वराज बैकयार्ड अल्ट्रा जो पुणे से है। और वन ऑफ द वेरी good performer Vishal Adhau is hosting that. And then we have which one? कितनी बता दी मैंने? हाँ, there is one more in Himachal. That is the 6th silver ticket event in India. So इनमें से कितनी रेसेस होंगी इसका तो वक्त बताएगा, पर जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी बाकी रेसेस के बारे में हम हमारे हैंडल से, या आप लोग हमें लिख सकते हैं फेसबुक पे या कहीं पे भी, तब भी हम उन चीज़ों को बता सकते हैं आपको। और इन सारी रेसेस में जैसा गौरव ने बताया कि एट लार्ज एक लिस्ट बनेगी। तो टीम इंडिया के लिए 4 सिलेक्शंस पहले से अभी से आ चुके हैं, जिनमें कार्तिक जोशी इज द फर्स्ट गाय, क्योंकि वो इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा के विनर हैं। और उनको असिस्ट करने वाले थे 2021 में मुनीश देव, तो ही इज द सेकंड पर्सन। और राकेश कश्यप, जिन्होंने अभी ब्लैक हॉर्स बैकयार्ड अल्ट्रा में जीत हासिल की है और वो फिनिशर रहे हैं वहाँ के, तो ही इज द थर्ड पर्सन। एंड विशाल अधाउ इज अनदर डिफॉल्ट एंट्री। सो इसके अलावा जो बाकी स्पॉट्स हैं, 11 स्पॉट्स बचे हुए हैं। और ये जो मैं 15 स्पॉट्स की बात कर रहा हूँ, ये वो 15 रनर हैं जो कि 15 अक्टूबर को जो रूट अपना वाला रूट है, जो इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा का रूट है, उसी रूट पे दौड़ेंगे। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि इंडिया की नेशनल चैंपियनशिप भी हैं और सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उनमें बाकी देशों के साथ कॉम्पीट करेंगे। तो अक्टूबर वाला जो इवेंट है, इट इज सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप। और वहाँ पर उसके होने का कुछ सिंपल सा आसान सा तरीका ये है कि आप जैसे रेस कोई भी बैकयार्ड अल्ट्रा का फॉर्मेट चलता है वैसे चलता जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ रनर्स जो है वो जितना ओवरऑल परफॉर्म करेंगे उनका क्यूमुलेटिव डिस्टेंस काउंट होगा और वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग उस हिसाब से बनेगी, है ना। तो हमारे पास 15 रनर्स जो हमें चाहिए वो बेस्ट रनर्स चाहिए इंडिया से, इसीलिए एट लार्ज लिस्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और ऐसी ही एक एट लार्ज लिस्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी चालू है। तो अगर कोई इंडिया के किसी भी इवेंट में, सपोज आपने 50 घंटा 60 घंटा या 70 घंटा कर दिया, तो इंडिया की एट लार्ज लिस्ट में तो आपका नाम आएगा ही, इसके अलावा इंटरनेशनल रेस में भी आपका नाम जाएगा अगर आपका इवेंट सिल्वर टिकट इवेंट है। तो जिस इवेंट में आप दौड़ रहे हो वो सिल्वर टिकट इवेंट है। तो
तो Hmm. आई थिंक ये चीज हमारे बाकी सारे लिसनर्स और जितने भी लोग हैं उनको क्लियर रही होगी। Hmm. और बाकी किसी का कोई सवाल है तो पूछो यार प्लीज, in हम लोग in यहाँ in पर आज। addition in हाँ addition to what Gaurav and Gagan said, that what is new in 2022, I think there is this one thing which is missing, and the हाँ new thing is that we are going to have more like women runners this time in comparison to our previous two प्रीवियस editions. टू रनर्स, हाँ ऐसा And है। that's quite fascinating to know, because the time we opened our registrations, the first four people who registered were women. क्या बात कर रहे हो? Yes. वाह। तो इससे हमारी शुरुआत हुई थी, एंड विच इज व्हाई वी वर क्वाइट होपफुल कि दिस टाइम वी विल गेट at least 50-50, you know, representation, 50% from women, 50% from men coming to our पता event. नहीं मतलब ये कहना तो काफी मुश्किल है, बट एक अगर ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो कम से कम और जो हमारी फीमेल रनर्स है उनको Hmm. इंस्पिरेशन मिलेगी। और आज के टाइम पे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स हैं, Hmm. तो वो सब लोग निकल के जब बाहर आएंगे तो ये देखना बहुत ही गर्व की बात होगी कि इंडिया की फीमेल रनर वर्ल्ड की एट लार्ज लिस्ट में फीचर करे। दैट Hmm. उससे बढ़िया खुशी की बात हम सब लोगों के लिए। और ऑब्वियसली हमारे मेल रनर्स तो लोहा मनवा ही रहे हैं, Hmm. बट फीमेल रनर्स भी अपना लोहा मनवा सकती है। Hmm. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। And today was the last day of registering, right? So, and any thoughts about तो extending? Hmm. आज हमारा लास्ट डेट है और वो रात को 12 बजे तक चल रहा है लास्ट डेट। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लोग रजिस्टर कर सकते हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें। Are you thinking of any extension? अभी तो आज वाला दिन चल रहा है, एक्सटेंशन तो वैसे मुझे लगता है कि हमारी सीट सारी फुल होने वाली हैं, तो Hmm. एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं शायद। Okay. हम्म। Okay. Any sharing about the volunteers you would like to have, like who, because they I saw that there were people who were asking about, you know, doing volunteering in IBU. हम्म। तो एक चीज, एक तो आशीष आपके आखिरी सवाल पर मैं बोलते बोलते ही कुछ बात सोच रहा था। तो बिल्कुल, आप कहें। हम्म. हाँ, तो हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट बहुत सारी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं और पड़ी हुई हम्म. हैं। हम्म. तो पब्लिक डिमांड पे देखा जाएगा, अगर एक्सटेंशन का चांस होगा तो वी कैन एक्सटेंड फॉर हम्म. अनदर फ्यू डेज। ओके, हम्म. दैट वी विल इन्फॉर्म बाय अनदर पोस्ट ऑन आर एनी ऑफ द पेजेस। हम्म. बाकी हाँ, आपका सवाल अभी क्या था कि हाँ, वॉलंटियर्स के लिए? वॉलेंटियर हाँ वॉलेंटियर के लिए भी काफी ज्यादा लोगों के क्वेरीज आई है ना, तो उनके लिए हम हाँ, कब? तो वॉलंटियर्स के लिए हम लोग आज या कल में ही एक फॉर्म हम रिलीज करेंगे। और जैसा कि हम हर बार करते हैं कि जो लोग दौड़ना नहीं चाहते हैं और केवल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम्म. देखना चाहते हैं रेस के कल्चर को, रेस के इवेंट को, आई हम्म. मीन इवेंट में कैसे चीजें प्रोग्रेस होती है उन सब चीजों को, तो दे कम एंड वॉलंटियर्स। और कई लोग इतने अच्छे होते हैं मन के, यार दिल के, क्या प्यारे प्यारे लोग हैं भारत में। सच में यार, मतलब वो हाँ. लोग अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के, और वो हम्म. हमारे दोस्त लोग हैं बहुत सारे तो। हम्म. एंड हम्म. आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, लाइक हम्म. you are one of those in last two editions, हम्म. and there are many जिनका केवल यारी दोस्ती के चक्कर में हम्म. और just to have a good time and nice time they come हम्म. to India Backyard Ultra and volunteer। हम्म. and yeah, what is this question? No, Is no, this a question? no, there is no question. Okay, Okay, yes. हाँ, so यश का this सवाल is आया है. flashing। यश का सवाल आया है. How many crew members are allowed this year? Okay, so two crew members as we have it in the normal, from last two editions,
2 क्रू मेंबर्स अलाउड रहेंगे एक रनर को। वैसे तो देखो बिग्स बैकयार्ड में तो एक क्रू अलाउड होता है एक रनर को। तो बिग्स बैकयार्ड के बहुत सारे रूल्स यहाँ फॉलो करने लगेंगे तो फिर वही है, भारत की जनता बड़ा प्यार देती है, बड़ा गुस्सा भी देती है। हमारे यहाँ पर वही है ना कि आलोचक बहुत है, तो हर तरह का मामला होता है। बिल्कुल। पर ठीक है, हमारी कोशिश यही है कि यार जैसा टेनिस में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा रनर जब जाएगा, हाँ। उसको जैसी चीजें एक्सपीरियंस होंगी वैसा एक्सपीरियंस उसको इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा में दिया जाए, ये हमारी कोशिश है। That's right. So this one question, like, what is the most challenging thing for you as a race director, which has come across, like, in the last 2 editions, or which is maybe you, if you would like to share that experience with us, and Gaurav, to you as well. Yeah, I think Gaurav, would you like to go for Would you like to first? go first? Yeah. The most Well, challenging it thing. has Yeah. been it has been challenging because I was not there physically at all in the Well, first it two was a safe editions. space. You were there. You were not there So, in the on the so on ground. Yeah. when you're not there by yourself, you are dependent on the communication, which was amazing, no doubt. The communication was always transparent and really good, but that always keeps you anxious, right? When you are not the person who is controlling things and you are dependent on that communication channel, and then you have to trust your team. In the first edition, I was struggling with that, Okay. having not worked with any of the individuals before ever in my life, Okay. to trust on them that they would make sure that things go as they are planned. And boy, I was surprised. Things were amazing. And in second edition, things became more easier. Because I knew that they had pulled it off in the first edition and they can do it in the second edition as well. Yes. Now in third one, again, for majority of time, I am still away. I'll be in India just before the race. So I'll be assisting in some capacity, but again, that's the same time when it's my brother's wedding. So I will be dominantly unavailable for majority of that time. That This is why time, that's why you are coming to India for your brother's wedding, no, right? I'm coming for the race. Brother's wedding was scheduled because of the race. Nice, that's a good So, one. so now I'll have to trust my team even more because I won't be available for a few days in any capacity, and that's happening just before the race. Yeah, So 1 week. Yeah. I mean, you it's need like to 2 days. be, So the wedding is on 11th and race is on 12th. So Yeah. just how close things are. and see, and you have a crew of idiots already. So trusting the team is something which has been prolific for me, and I think the team has grown in experience by a fair margin. And when you are planning a race for which you do not know when the race is going to end, the resources that you have to put together, the number of team volunteers that you have to pull together, it's always a challenge to keep everything in place when you do not know where the end is. While it is challenging for the runners themselves as well, that how much resources they need, how many crew members they need, how quickly they have to switch between the crew, because crew have their personal lives as well and they're not available throughout the race. Same is true for us as well, because our volunteers work really hard, and we have to replace them, we have to keep them fresh. But Yes. for how long, right? How frequently can we rotate them? It's always a challenging situation. The weather has been by our side for last 2 editions, but given I'm a climate change researcher, I can say for sure that that's not always the case, and that's never going to be always the case. So preparing for the bad weather is something that always keeps us on the toes, to have backup plan B and C ready all the time, to take Yes. care of every single individual, the safety of the route during day and night, because we have a lot of female runners as well. So we strive to provide the safest environment for each of our participants. So that all comes together and makes this event organization, which may seem easy from far, but makes it extremely challenging. Gagan, any challenges you would like to share पिछले 2 edition में कुछ ऐसा? यार challenges तो मतलब रहते हैं, ऑर्गेनाइज करना कभी भी पहले किया नहीं था, और जब करने लगे तो आई हैड अ गुड टीम, एंड मतलब लोग इतने अच्छे अच्छे और इतने अमेजिंग लोग मिल गए, दोस्त लोग हैं बहुत सारे जिनकी वजह से रेस होती है। और पिछले 2 एडिशंस पर हमारे साथ विश्वास सिंधु रहे हैं, रोहित कल्याणा रहे हैं,
और पिछले एक एडिशन में हमारी टीम बावरे बंजारे की रही है, मीडिया वाली, और वॉलंटियर्स रहे हैं सुंदरेश, बिप्लब, हरमिंदर, सरस्वती, नेहा, आई मीन ललिता, you, Jatin, Yogesh. There are many, and all of them are like really close friends. And Vinita is there. So all of them, इन सब लोगों की वजह से ही रेस होती है. और we are able to pull a lot of things. वरना एक या दो आदमी या तीन आदमी इतना अच्छे लेवल का इवेंट नहीं करवा पाते. मैं अच्छे लेवल का इवेंट अभी नहीं कह रहा हूँ अपने आप को, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट. अभी भी बहुत सारे चेंजेस की और कुछ एरियाज हैं जिनमें हमें बेटर करने की जरूरत है. But still, striving for improvement all the time and trying to improve a lot and lot. That's what we look forward to. और challenges, कुछ challenges होते हैं, कुछ moments ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको decision लेना होता है. तो वो challenges मेरे लिए रहे हैं. और when there was no one, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसी चीजें नहीं की थी कभी. ऑब्वियसली आप अपने लिए पर्सनल लेवल पे डिसीजंस लेते ही हो, ठीक है, एवरीवन डज दैट, बट व्हेन यू आर you are responsible for something which can affect or make some impacts, so you have to ask yourself a lot. तुम्हें अपने आप से सवाल करने पड़ते हैं, पूछना पड़ता है कि क्या सही है. और उस टाइम पे आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, बट यू हैव टू चूज व्हिच इज योर ओन कॉलिंग एंड योर राइट पाथ. तो वो मुश्किल के दौर से निकला हूं मैं इस इवेंट में पिछले 2 साल में. और थैंक्स टू माय टीम, आई मीन गौरव की वजह से और बाकी सब लोगों का जो जैसा माहौल रहता है ना, पूरा एक काफी हेल्पफुल और सपोर्टिव माहौल रहता है. तो उसमें आप वो चिंता मुक्त होके एक सही डिसीजन ले सकते हो. तो और फिर रनर्स इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मैं शायद मेरे आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ द वर्ड्स. मतलब हाँ, मुझे यही लग रहा था कि अभी गगन के जो आंखों से आंसू नहीं, इतना नहीं है. He is feeling nostalgic. He is getting all those old memories about like 2020 and 2021 editions, that he's gonna cry with his heart. Oh my babies, my volunteers. ना ऐसा नहीं. बट यार 2020 और 21 वाले दोनों एडिशन बहुत अच्छे रहे. और जैसा गौरव ने कहा कि 2020 वाला एडिशन हमने शुरू किया और 21 में चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो गई थी, क्योंकि हमारे ज्यादातर वॉलंटियर्स को और पूरी टीम को पता था कि किसको क्या करना है, कैसे चीजें हो रही है. तो ज्यादा स्मूथ था 21 में. और क्या मजा आता है, बस एक ही साल में एक चीज करते हैं, सब लोग मिलके एक साथ आते हैं और खूब मजा करते हैं. और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट. बिल्कुल. So before we go off now, so if you have got any questions, like any if you want to ask any questions to race directors, we can still accommodate 1 or 2 questions now. Send in quickly. Before we call this session off, Gagan and Gaurav, how many hours are you expecting that this edition is gonna go? How many hours? That's the worst question that you should ask a race director, because as race directors we expect world record is 85 hours, so we expect our runners to stand for 86 at least. 86. Okay. Anything less than that is not acceptable, I would say. But as a race director, you always expect your runners to give the best, and the best performance is 1 hour better than their last one at least, right? So every runner is challenging themselves, their past performances, and their mental barriers. That's what backyard format is all about. So we will go as far as our assist is willing to go, right? And an assist plays a key role in defining the end line of this event. With other ultra marathons, you have fixed number of hours, fixed distance that you have to run, and you can take your time to run for that hours and to run for that distance. In backyard, there is nothing like that, right?
you are always competing against your own mental barriers, your own demons that you bring with yourself, and the person who's running next to you, is that person breaking? Are you breaking? How much can you really pull things together and still continue to go on the race trail? So all these things matter. So how many hours the race is going to last? My bid is 86 at least, but it's up to runners how much they are willing to give. And because every hour, as I said, every hour matters. Every hour places them in international rankings and national rankings as well. So Yeah. and one thing that I've observed, every runner participates in backyard ultras with an ultimate aim that the one day they would want to represent India in the world championship. And this is what we expect from every individual who has signed up, right? Yes. That they Yes. want to represent India at some stage. So I believe if they want to represent India at some stage, they should be willing to give what it takes to stand at the start line and listen to Laz's cowbell. Less is cowbell. Yeah. Okay. Is there anything else you would like to add or say if we have missed anything? Yeah, I have few things हाँ. to add on, जैसे हाँ. कि बैकयार्ड को अगर कोई इंसान ये समझ रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है, भारी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी गलत सोच है। और बैकयार्ड फन चीज़ है। इट्स मेरे हिसाब से अगर मैं किसी बैकयार्ड को करना चाहता हूँ, जो कि मैं हमारे अलावा जो 4 या 5 बैकयार्ड हैं, जब भी जल्दी किसी बैकयार्ड I will try my best to run one of the backyard soon. So it's a place where you train. It's your training run, nothing more than that. जिस दिन अच्छा मूड होता है और जिस दिन हम लॉन्ग रन का प्लान करते हैं, वो दिन है 12 फरवरी और कुछ नहीं है। That's it. तो इस मेंटल एटीट्यूड के साथ आप आओगे तो बड़ा मजा आएगा। और जैसे कि हम ये यहाँ पर कह रहे हैं बार बार, इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा विनर विल गेट ए फ्री एंट्री टू द नेशनल टीम चैंपियनशिप इन October 2020. So this is the catch. This is the catch and this is the new and interesting thing. So जो इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा 2022 में 12 फरवरी को जीतेगा, उसकी एंट्री फ्री फ्री फ्री। हाँ, एक और चीज है, जब आपने पहले मेरे से पूछा था ना कि रजिस्ट्रेशंस का कुछ एक्सटेंशन वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट बन के आंसर दे रहा था। तो ऐसा है ना, ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वी आर एक्सटेंडिंग द डेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन टिल 31 दिसंबर 2021। ठीक है, तो अपना हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बता देते हैं। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, रजिस्टर करो एंड कीप रनिंग। 2021 साल के खत्म होने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा के बंद हो जाएंगे रात के 12 बजे। तो उसके बाद हम सब ऐसा है कि 2021 के खत्म होने के साथ आपके खुशी भरे दिन भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद दर्द शुरू होगा, पेन शुरू होगा, जो कि 12 फरवरी को पीक पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अब तो डायरेक्टर्स ने अनाउंस भी कर दिया है एक नया जो लेके आए हैं, वो कि जो भी जीतेगा इस साल, जो भी ये फरवरी वाले सिल्वर टिकट इवेंट में जीतेगा, उसको फ्री एंट्री मिलेगी अक्टूबर 2022 के। आशीष, you should do that one, है ना? आपके शहर में पहली बार। अच्छा, that's like a sales guy, no? Sales guy, like it. आपके शहर में पहली बार 70 सीटें, बस 70 सीटें हैं हमारे पास, तो दिल खोल के आइए, सीट अपनी बुक कराइए। 31 दिसंबर तक हमारी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो खुले हुए हैं, तो आप 31 दिसंबर तक बुक कर लें रात के 12 बजे तक। और बहुत कुछ मिलेगा आपको साथ साथ में, एंटरटेनमेंट। अरे हाँ, अरे एक दो चार चीजें और याद आ रही मुझे। जैसे एक तो जो लोग क्रू करने आ रहे हैं, अच्छी अपनी बुक्स लेके आओ। आपके पास धूप में सेक के आराम से धूप में बैठ के पढ़ने को काफी वक्त होगा, क्योंकि आपका रनर जो है बेचारा दौड़ रहा होगा और आपको 40 मिनट तो कम से कम मिलेंगे ही रिलैक्स वाले। और
बढ़िया सी चादर, बढ़िया सी दरी लेके आओ, धूप Hmm. में बिछा के आराम से आराम करो जब तक आपका रनर लूप पे है। तो जो लोग क्रू करने आ रहे हैं ना, उनके बहुत मजे हैं। इसके अलावा गिटार है, ड्रम है, ढोल है, जो लोग क्रू करने आ रहे हैं। और जो रनर के पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो लेके आओ। वो इट्स हमें अ दे पार्टी। हाँ, इट्स अ पार्टी। नहीं नहीं, वो खुद भी बजाएंगे ना यार। हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही एक गाने बजाने वाले नहीं आदमी नहीं नहीं, हमने तो कहा ही नहीं सर ये। हो? राइट। सो हाँ। इट्स अ फन प्लेस। काफी अच्छा माहौल रहता है। गाना बजाना, खाना पीना, ये सब चलता है। प्लस ऑल्सो अपनी चीजें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो करते रहे। वेबसाइट जरूर विजिट करें। वहां पर थिंग्स टू रिमेम्बर और खास तौर से ध्यान देने वाली चीजें हमने सारी लिखी हुई है, उनको पढ़ें। और जो सारी जरूरी चीजें हैं वहां से आप तैयारी करके आए। Kalpana Saha is crewing this time, which is why, because she wants to read or she wants to play anything. That's what she meant, I think. Oh, that's why I'm crewing. Oh. So Yeah. she got the real part, Mm. fun is in the crew. And but this is not great for us. Like, we wanted to see her, Yeah. crossing. Yeah. Yes. Yes. Okay. But That it's is. always good to have her. Yeah. Yes. Yes. That reminds me that to let me put it to for our viewers that on Saturday, for the session fourth, Kalpana will be joining Lalita for a great conversation about Kalpana's experience of backyard, and because she became the first women runner to cross to do 100 miles. So it's gonna be fun. So do tune in, share our page, share that poster, and we would like to see you on our episode 4, which is streaming on Saturday 6 p.m. So till then, thank you so much for joining us, Gagan and Gaurav. Thank you so much for taking out time out of your busy schedule. And yeah, I hope it was informative as well as very entertaining session. I mean, at least I enjoyed it. So so yeah, so thank you so much. Thank you to all the listeners, all the viewers who are watching us, who Well, are before you listening call to. off, I Yeah, quickly want to end on yeah, this please, please, please. this Yeah, Yeah. this significant note that yeah. the registrations, first of all, have been extended, and we look forward to receiving your registration. There are We look forward to have best of the runners selected for Team India so that Team India can compete against the rest of the world. There are some amazing runners that other nations have put together, and the same we expect from Team India as well, that they put up a great show so that we are among the at least top 3, if not the first one. We would love to be the first one, but so in so the way national championship would work, while team is competing against each other, so whatever loops are 15 runners will run together will be counted, and that's the tally of the loops that will be matched to for the rest of the world. And the winner of within the team will be the person who will walk away with a golden ticket and represent India at the World Championship. So, and as race organizers and as people who love our nation, we would want that best runners who have been running ultramarathons for a significant period of time be there and stage a performance that's uplifting their nation across the globe. So be Let's there. make Yeah, yeah, let's make India proud. yeah. Yeah. Okay, okay. So thank you so much, and we'll see you on Saturday then. Bye bye. Take care Bye. wherever you are. Have fun.